Getting my Desi Bezzies today. Emiway, he's only gone and dissed Krishna again. I thought after the death of Sidhu Musiala, rest in peace, I thought after his death, Krishna put out something on Twitter or Instagram saying, you know, we need to allow the beef, the community needs to come together. And now all of a sudden Emiway's dissing again. I don't understand. But thank you to Hip Hop Chasm because we actually have the English translation to it. So, without further ado, obviously I know that Lariat popped up anyway, is going to put his version out either today, tomorrow, whenever it's going to be. I know you guys are going to go and watch that, so make sure you hit that up as well. I'm getting mine out nice and early, so without further ado, like, comment, subscribe, and let's do this. लहरों से कर रहे थे बातें, अब होगी सुनामी से. नाम है बंटाएगा छोटे, तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से. बेटा बापा आ गया वापस. Daddy's home. Yes बेटा आ गया मैं वापस ना. So obviously Emiway in that, what was it that we did, Chusamba? He did the whole Daddy's home thing and then Krishna did it and now he's doing it again. So they're trying to like one up each other every time. Regular beef shit. नाम है बंटाएगा छोटे, तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से. बेटा बापा आ गया वापस. Daddy's home. यस बेटा आ गया मैं वापस ना. थोड़ा बाहर गया था काम से. आवाज कम करो बेटा जरा, पप्पा कुछ बोलेंगे. अभी पप्पा की बारी है ना. उधर बैठो चुपचाप. फैन से बुलाता है तू फक एमिवे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक एमिवे. आया पहले को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे बस. Okay, just to start off, this already sounds like the beat and the whole like energy from him. It seems a lot different to Chusamba, because Chusamba for me personally just seemed like a throwaway track. It didn't even really seem like he was dissing Krishna at all. It seemed like, and the whole thing of him being in that big ass house, it just looked like a flex. That's all it looked like. It just looked like style over substance. So I'm hoping we're going to get the substance this time. And it sounds like it. You told your fans say fuck Emiway and it manifested. You got fucked by Emiway. Emiway. I really need to remember that his name's not Emiway. करो बेटा जरा, पप्पा कुछ बोलेंगे. अभी पप्पा की बारी है ना. उधर बैठो चुपचाप. फैन से बुलाता है तू फक एमिवे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक एमिवे. आया पहले को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे बस एमिवे. फैन से बुलाता है तू फक एमिवे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक एमिवे. आया पहले को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे बस एमिवे. I mean, I will try not to pause it too much. However, him saying the whole manifesting thing, now in his chorus, people are going to be saying fuck Emiway. In his own chorus. I hope he understands that. Because even if you're singing along to this as a fan of Emiway, you're still singing the words fuck Emiway. तू और तेरा गैंग ठसने लगा है. कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है. मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है. करा मैंने काम इतने साल बिना नींद ले दिया तुझे डेस पूरा किया तेरा ड्रीम बना नी में इस गाने में खड़वा. Okay. Guy's saying I'll make your dreams come through and then he's talking about sleep, Aladdin rubbing the lamp, Genie with the wishes, you get your dreams. But basically he's saying be careful what you wish for. Do you know what I'm saying? This definitely seems like it's got more substance already than Chusamba. आया पहले को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे बस एमिवे. तू और तेरा गैंग ठसने लगा है. कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है. मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है. करा मैंने काम इतने साल बिना नींद ले दिया तुझे डेस पूरा किया तेरा ड्रीम बना नी में इस गाने में खड़वा. कैसे की एक्टिंग करेला ये भड़वा. गुड़वा लंड पकड़ के लटके जा रहा लौड़े के काफी समय से तू बचते जा रहा. बच के जाएगा कैसे बनना मस्ते भाईजान. सांपू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन माइक. I mean, he did just call himself a snake. Obviously, you guys know, I'm completely unbiased. Like, usually when it comes to, like, beefs and stuff, I'm just interested in the better artist or the better diss track. That's all I'm bothered about. I can't really take sides. Do you know what I mean? It's not like I know him personally. So when he's actually showing out on a track, I can give props to him. Chusamba was dog shit, and I couldn't give props to that because it just sounded like mumbling, just gargled shit. This has actually got substance. This has actually got bars. He's got a flow as well. His flow wasn't half bad through that.
करा मैंने काम इतने साल बिना नींद ले दिया तुझे डिस पूरा किया तेरा ड्रीम बना नहीं मैं इस गाने में खड़वा कैसे की एक्टिंग करेला ये भड़वा गुड़वा लंड पकड़ के लटके जा रहा लौड़े के काफी समय से तू बचते जा रहा बच के जाएगा कैसे बोलना मस्ते भाईजान सापू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन माइक ऑन बोल मदर चोट साले है कौन कोलैब किया डिस किया तभी बना पहचान बेजान तेरे गाने मेरे बिना ये गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना दिस गेम में हम बैठे ले बाप हाँ ब्रेकफास्ट और लंच खत्म खाऊंगा मैं डिनर ब्रेकफास्ट मतलब छोटे पहला बीफ कम है लंच खत्म किया दूसरे में भी जी नो लॉस डिनर करूंगा तो डिनर नहीं है साले तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट गाली देता क्योंकि बनता है स्ट्रीट बेटा मुंबई के सड़कों में that's how it is say my name ले गांड में डालती रे लाया बनता है नेडिस कान से बुलाता है तू fuck Emiway मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे fuck Emiway आ पिलने को तुझे बेटा दिन रात Just from the first verse, I will say that when it comes to diss tracks, if he's going to go up against Krishna, he's going to go up against Raftal. I haven't heard Raftal's diss tracks, but I've heard Krishna's, and Krishna's are at like a very, 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 very high level. Like this guy's going to have to do a lot better than he's currently doing in order to beat Krishna. Krishna's got like a one bar from Krishna could mean like 4 different things until you hear the next 2 or 3 or 4 bars, and then it's connected enough that you know what the first one meant. You have to like go back through his shit. Whereas anyway, I think it's very face value. It's very easy to get. It's very palatable. That's probably why he's more popular than Krishna. However, when it comes to skill, Krishna is, in my opinion, so far, a lot better than this. You know? I don't know. Let's see what the next one brings. फैंस तेरे बोलेंगे अब बस Emiway फैंस से बुलाता है तू fuck Emiway मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे fuck Emiway आया पिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस Emiway तू और तेरा गैंग ठसने लगा है कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है आइंदा से जाना नहीं बंदी पे तू ये बात भूल मत निकलेला किसी बंदी से तू सही बोला मेरे बंदी के बारे में काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की पिंकी बहुत सैड है Oh shit. So he's actually dissing Krishna's mom. That's kind of peak. I swear in Punjabi or in Indian culture, it's like very frowned upon to diss somebody's mum. It's the same as like Albania. The mum, the sister, off limits. You know what I mean? जाना नहीं बंदी पे तू ये बात भूल मत निकलेला किसी बंदी से तू सही बोला मेरे बंदी के बारे में काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की पिंकी बहुत सैड है भूल गया तेरा बंटा ही डैड है याद रख बेटा फैमिली पे गया तो हरामी ये छोकरा बंदा बहुत बैड है कोई वाइब बेटी ठंडी में तू सबको मालूम है कितना टाइम लगेगा बे बुरा बोलने में खराब करूँ इज्जत तेरी मम्मी की क्यों गलती माँ की नहीं See, I don't like that. Because he basically just said like, if you try and talk about my family, then you know it's off limits. Where like I'll go crazy, blah blah blah. But then he's just spoken about Krishna's mom, like about Krishna's family. So you can't have it both ways, bro. Emiway is basically saying I want to be able to do this to you, but you can't do anything to me. He's basically button bashing on Tekken. That's what Emiway is doing, bro. He's hitting the same button every time, and you've got no defense for it. Doesn't seem right. Does not seem right. कितना टाइम लगेगा बे बुरा बोलने में खराब करूँ इज्जत तेरी मम्मी की क्यों गलती माँ की नहीं झाटू औलाद की है दिल्ली का नाम तेरे जैसे लोगों ने बर्बाद किया राखी जरा गौर तो फरमा कैसी बातें कर रही आर्टिस्ट तेरी तू खुद भी जानती है लेकिन नहीं ब्रा यही सिखाएगा दूसरों के बंदियों के बारे में बुलवाएगा अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को तू क्या सिखाएगा लिमिट में रहे वरना मुंह खुल जाएगा गजनी है शॉर्ट बेटा सब भूल जाएगा दूंगा गालियां भागेगा जैसे माल Now obviously we don't know if that's true. Raftal beating his wife up. But that's like quite a serious allegation to just throw out there about somebody. Do you know what I mean? Saying that my mum beats his wife up. So he's not even just dissing Krishna, he's dissing Raftal as well. He's probably dissing like Deep Kalsi and all them other man in there somewhere. He's just dissing Kalamkar. Come on, man. जानती है लेकिन नहीं ब्रा यही सिखाएगा दूसरों के बंदियों के बारे में बुलवाएगा अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को तू क्या सिखाएगा लिमिट में रहे वरना मुंह खुल जाएगा गजनी है शॉर्ट बेटा सब भूल जाएगा दूंगा गालियां भागेगा जैसे मालिया में जैसे इंडिया भिड़ने फिर से नहीं आएगा छोटे कम आउट टू प्ले हर रात को बोलता हूँ मैं मेरे लंड को छोटे कौन है सबको मालूम राह मतलब मेरा लंड वो खड़ा बेटा सीन में मैं चौड़े से तू कारीगर माँ कसम खड़ा को दे फावड़े से लौड़े ये लौड़े वो क्या करूँ शक्ल तेरी मिलती है लौड़े से सारे फैक्ट से अटैक करूँ तुझे बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर बुलाते हैं मुझे 15 साल से तू कर रहा है काम जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे कुर्बानी तेरी बांटूंगा गोश्त So Emiway's touching on something that he said in the last diss on Chusam, but he's basically saying like, you didn't get famous until you started mentioning my name, and now that we're associated with this beef, now you're starting to gain a bit of fame. Do you know what I mean?
But if that's the case, I don't know why Emiway would even lower himself to diss Krishna. If they're not on the same level, then why is he sending replies? Do you know what I mean? Like, if they're not on the same level, let the fans decide. But since most of the rap fans have told him, you know, Krishna's better than you, it genuinely pisses me off, because, you know, if, like, Krishna's flows, a lot of the time, as impressive as they are, they're very, like, basic and syllabic, because they are based on the syllables, whereas somebody like Emiway can create, like, the most sporadic, weird flows. If those two just stopped beefing and worked together, they might actually make something incredible. Because the only thing Emiway is missing from his game is the bars, and Krishna's got that in abundance. And I feel like the only thing that Krishna's missing from being that, like, relatable and palatable sound is he's missing somebody in his camp, like Emiway. Somebody who's a seasoned veteran but knows how to play that game of, okay, what's the flow for now? What's this flow? What's this new thing that I can monetize and get out there straight away? I feel like if they both just put their heads together, bro. But no, it's fucking 2022 and we're still beefing. Just have a dinner or something. Just sit down, have a cup of tea, chill the fuck out, both of you. Whoa! How have I just realised as well, this is 8 minutes and 11 seconds long. I'm going to try not pausing for much longer then, because otherwise this is going to be like a 45-minute reaction. है मुझे 15 साल से तू कर रहा है काम, जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे कुर्बानी तेरी बांटूंगा गोश्त तेरी मीठे है मेरे बहुत हरामी है दोस्त सीधा शॉट तुझे देख के रांड छिनाल छमिया से आगे मेरी बढ़ती नहीं सोच रैप गॉड हूं मैं ही रैप डेविल चट्टानी पत्थर तू झाड़ भर का पेबल तू रैप गॉड a rap god. This man just said he is a rap god. Do any of us believe him? Do any of us believe him? I've only heard 2 songs from this motherfucker. He ain't a rap god. रैप डेविल चट्टानी पत्थर तू झाड़ भर का पेबल तू कर सकता कॉपी मेरा फ्लो मेरा स्टाइल मेरा वीडियो का वाइब नॉर्मल लेवल मालिक करता है मेरा देखभाल बे उखाड़ भी नहीं पाएगा तू मेरा एक बाल अगर चलता रहेगा ऐसा चाल सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है ये साल इतना सॉफ्ट कौन बनाता बेटा डेज भारी डेज बनाने का तो लो पप्पा से टिप्स ओनली फैंस पे मिलेंगे तेरे ठुकाए के क्लिप्स सिर्फ 7.5 मिनट का है 16 क्लिप्स कौन रोकेगा रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को इतना बचका गाना 15 साल What did he just say about fucking solar तक पहुंचने को OnlyFans. You will find clips of yourself getting fucked on OnlyFans. Solar Eclipse just stays for 7.5 minutes, son. I don't know what that means. Is he basically saying you can only have your 15 minutes of fame and then fuck off? Who will stop the light? It will take more than 15 years for you to reach till me. Okay, so he's saying... Okay, so he's basically saying, like, obviously a solar eclipse, he's saying he's the bright one and Krishna's the absence of light that's, like, taken over. But it's gonna pass, his time will pass. I'm guessing that's what he's saying. रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को इतना बचकाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को हराएगा मुझे तू ये सिर्फ कहावत है पब्लिक को मालूम कि बनता है फुलाफत है 8 के जगह पे 9 दिखाया बे एक्स्ट्रा उंगली करने की तुझे बेटा आदत है बेड़ा बाप तेरा वहां पे तुम यहाँ पर हो लाइन चोरी करते हो तुम कैसे रैपर हो पिंकी बोलती है रियल इन द सीन मुझे नहीं लगता तुम असली रैपर हो इसके बाद चैन से तुम सोना पाओ ले झंडे रे तू और बनता है लेजेंड रास्ता नहीं मेरे आगे मैं हूँ तेरा डेड एंड जन्नती सोच इसलिए लाइफ मेरा हेवन सीआर का मारे मैं CR7 बॉलिंग नेमार मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार ऑनेस्टली बोलता हूँ ऑनेस्टी नहीं है Okay, that's a bar. Balling with Neymar, your life's too messy. Lionel Messi, Neymar, balling with Neymar, balling like money but also balling, kick ball, let's go. Come on, man, that's not bad. मेरा हेवन सीआर का मारे मैं CR7 बॉलिंग नेमार मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार ऑनेस्टली बोलता हूँ ऑनेस्टी नहीं है तू गाने में तेरे हाँ बंदा तू बेईमान मैं मेरे पंटर आज भी स्टूडियो में दिन रात काम करे जमकर ढापे मेरा फ्लो के तना कल से बंदर सिल्वर बैक टू ए बैक बनता है लायन ऑफ द जंगल शुगर करूँ हम मार नहीं खरे बेटा सामने तो आ तेरी गांड नहीं मारे मेरे पंटर असल में लगा देंगे लंगर लफड़े की बात मत कर 34 के अंकल बना मैं आमिर खान सुने तर से गाने मेरे दंगल कुश्ती है सोच के मैं गया बड़ा संपर्क बोल बचन शानपति शमेद रकम कर राखी नाचारी और तू उसके पर पंचर देख मेरा मंजर सूरज बनता है तू आसपास भटक रेला मंगल और चांद फिर से मरवाएगी ये रन ऑटोमेटिक खुलेगा टांग बीच में से निकलेगा नाम एनाकोंडा रैप गुंडा बैड गुंडा चूस लोड़ा जैसे बेबी ये आलू का पकौड़ा तू पुसियों की That
was like an old grind flow. See what I mean? Like Emiway has got flows, but the bars are very like few and far between. It's a lot of filler. It's a lot of filler. When Krishna writes a diss track, almost every line is dissing you, whereas it doesn't feel like every single line or every single bar in this is aimed at somebody. It just feels like a throwaway track. Do you know what I mean? 8 minutes of this shit as well. करोड़ों का राजा बिना डिस्क किए पोक किए गाना सारा डाल बिना प्रमोशन यूट्यूब पे वीडियो निकाल फिर देखता हूँ हाइप तेरा कभी नहीं डेड होगा हाइप मेरा सब ऑर्गेनिक डोंट पैनिक इंडिपेंडेंट नंबर 1 रैपर इस देश का हकीकत खाली हवा भरेला तू पैकेट है लेस का अपन है रुपया तो डॉलर विदेश का बहुत ट्राई बेटा मैं नहीं तेरी गैंग करी लेकिन फिर भी हरा नहीं पारे अंडरग्राउंड Did you say the rupee was an outsider currency? खाली हवा Indian rupee were an outsider currency. I thought the rupee was the currency of India. What the fuck do you use then? What do you use? करेला तू पैकेट है लेस का अपन है रुपया तो डॉलर विदेश का बहुत ट्राई बेटा मैं नहीं तेरी गैंग करी लेकिन फिर भी हरा नहीं पारे अंडरग्राउंड दफनाया डॉलर को खर्चा देने पब्लो इसको बाहर निकाले डिवाइन ने मिलाया तुझे शो के बाद तुझे सपोर्ट किया मैं धोखे बाद तूने पूछा था भाई साथ गाना बनाते लोग जानने लगे तुझे उसके बाद काफी मेहनत लगाया मैं बिजी था फिर भी गाना बनाया मैं इसके साथ आज बोलती है पिंकी मैं रैपर नहीं बे पाब्लो हूँ गॉड ओनली गोल्डन बॉस तूने डिस किया क्योंकि मैं बोला इंडिया को कर रहा मैं अकेला रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ काम कोई शक तेरी तरह नहीं हूँ मैं डिपेंड तू कर प्रिटेंड मैं जानता हूँ रफ्तार से हुआ नहीं लेने आया तू रिवेंज अनडिफीटेड रहूंगा जिंदगी भर खबीब मैग्रेगर तू तेरा एंड अब तू बोलेगा ब्रो The McGregor versus Khabib bar, fire, and obviously he's saying he's Khabib. He's saying that Krishna's McGregor, you know, and not only is he saying that in the sense that Khabib beat him, but also in the sense that McGregor was like the hype man. He was the guy that all the fans were backing. All the real ones wanted Khabib to win, so that's what he's saying. I feel like it might be the other way around, but seems like Emiway's got delusions of grandeur. तेरा एंड अब तू बोलेगा ब्रा भैया ने बंटाई को शुरुआत में किया सपोर्ट फिर काय को बंटाई ने रफ्तार को डिस किया असलियत जान मेरे दोस्त जब खुले आम बोला मैं पैसा कमा रहा नहीं दिल में लगा मेरे चोट मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान था ये दोस्त जान ले दुबई में बैठ के कर रहा था बकचोदी लोकेशन एंड टॉफिल करते रहा मैप ऑन पुसी के अंदर का टैम्प ऑन उखाड़ भी नहीं पाएगा इवन इफ यू पुट अ कैप ऑन कुछ बड़े लोग के जैसा बात कर बे बचकाने And obviously he's saying that because when Krishna puts his cap on, he puts the cap on when he's dissing people, I've been told. So he's saying even if you put the cap on, fuck you. कुछ बड़े लोग के जैसा बात कर बे बचकाने छमिया टोपी पहनने का तो डेंजर हो जाएगा अबे खेले पाओ फेयर एंड लवली तू क्या टोपी पहनेंगे देखो तो लोग टोपा पहना दिए ले लाला सी माय नेम या ले जशन मना आज से तू केयर डॉलर साइन नहीं आज से तू केयर लोड़ा साइन मालूम है ना तू तेरी गैंग सब एक साथ आ जाओ लाला फिर भी बनता का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे क्या लोड़ा साइन मेरे अंडवे के शक्ल के टीजर है ये लेकिन तेरे पिक्चर मैं ही बनाऊंगा फिलहाल खत्म करते करते इसको थोड़े लाइन और देना पसंद करूंगा सुनो तू बेसमेंट है अपन है रूफटॉप खन्ना से लेता हर रात को तू भूप जॉब कलमकार को तू बना डाला बेटा डेथ रो खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं स्नूप डॉग फेयर एंड लवली तू ये चिकने Okay, a bit of current affair shit. खन्ना से लेता हर रात को तू job कलमकार What do you say? I'll buy your label like Snoop Dogg, because obviously Snoop Dogg like recently bought Death Row label, I believe from Suge Knight. But if you're planning to make Callum call Death Row, then I'll buy it off you. Like even if you make something of yourself, I'll tear it down. That's kind of evil, you know. तू बना डाला बेटा डेथ रो खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं स्नूप डॉग फेयर एंड लवली है तू ये चिकने 34 की लगती पर कौली है तू कलमकार घराने की नौरी है तू फिर भी बनता के केले के लिए हौरी है तू काय का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप मिलेगा शॉट He's taking the piss out of Raftar's voice, isn't it? I really like it when Raftar does that gruff voice. I really like it. And obviously that is his rapping voice. But the fact that Emiway's taking a piss out of it, that's kind of deep. I can't lie. Oh shit. Because it actually sounds sick on Emiway, do you know what I mean? And I don't know if I like that or not. के केले के लिए हौरी है तू काय का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप मिलेगा शॉट रगड़ लेगा नहीं मिलेगा स्पॉट देख के हंसा मैं बहुत ये लगा है बॉट सब हो गए लेको Do you know what's annoying as well? Like the most like emphatic that he sounded is when he did Raftar's voice.
बोले ये सजाए मौत अपना दिल बड़ा देख तेरी सजाए मौत लाइमलाइट के आसपास भटक रहा है रेड अलर्ट बनता है तेरे लिए खतरा है प्राइमरी किड्स ये चड्डी में आ ए नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है बीफ करना है मम्मी से पूछ खा जाऊंगा करियर बचेगा नहीं कुछ अभी भी भूखा घर गाड़ी हीरा मेरी मम्मी है खुश तुझे पैदा करके माँ तेरी पछतारी खुद सो सैड रफ्तारी खुद गायब है तू कौन सा नायाब है तेरे भैया का रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे मैं मेरे फ्रेंड्स जाने मैं हूँ रेवोल्यूशन टेस्ट करना चाह रहे अंकल आपस ले लो ट्यूशन गलत जगह गुस्सा भी वक्त ले ले यू टर्न करियर तेरा गिरता देखूंगा मैं जैसे न्यूटन होगा करियर तबाह Isaac Newton, I'll watch your career go down. Isaac Newton obviously came up with the theory for gravity. That's kind of sick. Also, side note, does anybody know how he came up with that? It was because an apple fell on his head. People were so smart back in the day. What happened to us, man? Now we're doing this shit. Dissing people. गलत जगह गुस्सा भी वक्त ले ले यू टर्न करियर तेरा गिरता देखूंगा मैं जैसे न्यूटन होगा करियर तबाह Also, Krishna's had a track called Fall Off and Say My Name. And he's mentioned both Fall Off and Say My Name. ले आ पूरी सभा मेरे गाने में मेटाफोर रेफरेंस और इमोशन वाइब है जिंदगी हार्ड थी किया सवाई में म्यूजिक के जरिए से दिया दवाई में पब्लिक को मालूम है करता तबाही में दिल्ली का गुड़वा तू मुंबई का भाई में चाहिए बार से जैसे शुग नाइट मिडनाइट फेल डला समया चल गुड नाइट बस हो गया भाई बस हो गया बस नाके पे रेल फाटे पे और पिंकी तू मेरे फैन से बुलाता है तू फक एमिवे मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक एमिवे आया पिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस एमिवे फैन से बुलाता है तू फक एमिवे मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक एमिवे आया पिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस एमिवे तू और तेरा गैंग ठसने लगा है कोल्ड वाइब बुला रहा पर अभी हंसने लगा है मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है घसते रहे पिंकी भड़वी Okay. I don't know. I don't really know what to say. Other than the fact that I genuinely think that Emiway Bandai has delusions of grandeur. He thinks he's better than he actually is. Or he's let people gas him up to the point where now he thinks he's better than he is. You know? Either way, he thinks he's better than he actually is. Because he even said it at the end of that. He was like, oh, my songs have got, you know, they're emotional, they've got metaphors, it's a vibe. But it's not. It's not. I haven't felt emotion from any of his songs. And obviously, I shouldn't really even speak on that because I haven't heard enough of his songs, but okay, so emotion's out of the way. I felt emotion with Krishna's tracks. He had that, what was the first one that I listened to? Where I said he reminded me of Tupac the way he was talking. And he was talking about, he was inspirational shit. It was like, no, you can do this. I forgot what that track was called. Maybe, I don't know. I forgot what it was called. Anyway, he doesn't have the metaphors. Do you know what I mean? Some of the bars in there, they're all right. But I should be able to remember like a few bars from that whole 8 minutes of recording. I should be able to remember a few bars, and I can't remember any. And I've just listened to it. That's how forgettable that was. That was 8 minutes of my life, and I've forgot every single word that he just said. That's how forgettable that was. Like, at least with Krishna's, we got that fat chuk neko. We had an absolute bop there. I don't know, there just wasn't anything there for me other than the flows, which, you know, as sporadic and impressive as they are, it's not gonna win a diss track. It's not gonna win a diss war. It's just not. Because people don't care about flows. They don't care about the beat. People care about the lyrics. What are you fucking saying? You know? And I don't feel like he was saying enough. I don't know. That's just what I think. But you let me know what you think. I can only be honest with you guys. I'm not a huge fan of Emiway. I'm rooting for him as an outsider, someone who's completely unbiased in this shit. I'm not a huge Krishna fan. I'm not a huge Emiway fan. I don't want either of them to win. I want them to do their best. I just don't feel like this was Emiway's best. It can't possibly be his best because it's not good enough. So it can't be his best. Guy's got like millions and millions of views. He's got to be better than this. Especially with 8 minutes of material. Say something.
It's been your boy Teddy Grey on Stuff. Peace.